Want to crack interviews at FAANG and other top-tier tech companies? You can. With USA's #1 tech interview prep platform, you get access to 500 FAANG Plus experts, all from the world's leading tech giants. We've already helped 25,000 plus tech professionals land their dream roles. You could be next. Don't miss out. Register now for our free webinar and take the first step toward your FAANG dream. So, yeah, I think this is data modeling round, right? Yes. Sure. Okay, let me give you the problem. In the meantime, what you can do is, can you open a notepad Yeah. or Excel draw, whatever you have? Yeah. Actually, that day, no, Spark का interview हुआ ना, immediately उस दिन evening like MNC है Virtusa का AI round था. It was for 45 minutes. I could answer very excellently because the same day mock हुआ था मुझे. Got it. Good. So they were very much happy. They said that out of 5 you scored more than 5. Okay, so I think it worked well, right? Yeah. So, I think I can give you a problem, okay? So this is a problem, okay? And this is what you need to do as part of, data modeling. Let me just put it up here. And You're working as a leader. I'm just giving you the requirements as well. So let's say when designing a data model, these are the things that you need to take care of. Requirements I'm giving you over here in the chat window. These are the requirements. Okay, and you have to kind of you have to build the schema or the data model. And this is what I want from you. I have given you in the chat window some more content. So you have to do the star schema. You have to come up with a star schema, okay? Okay. So you'll be giving any fact table so that from there I fact can table, build the dimensions. Fact table, you have to decide what would be your fact table. Okay, so yeah, that is how it goes actually. Okay. If you want, I can give you the fact table, but generally you have to come up with a fact table. Okay. So I can take the Excel, right? Yes. You can take and you can open a notepad actually or Excel draw. Excel draw is not. This is a tool for doing the Yeah. data modeling and system design. No, this one. I'm just pinging you over here. Just open that. You can search it in the Google. Okay. So driver allocation, fare calculation, and customer support by leveraging a robust data pipeline and data. You mean I have to draw the table here? Can you Yes. just please help me out? Acha. These are the ones. This is the frame and these are the lines, which I have to. Yes. So see, if for tables you don't need to draw the block diagram, you can just write it down. For example, table is user and you can start giving the columns. You don't need to draw these squares and everything. Oh, okay.
So for driver details, I'm taking mainly for his ID, name, ID proof, and address. That would be enough, right? First, you try to draw it by yourself, whatever you think. You have to come up with a star schema. Then I tell you. Okay, okay, okay. Fare calculation and customer support. Fare calculation. So according to my understanding, like the driver details will be the fact table wherein he will be connected to the various dimension tables like the fare details, user details. Driver table would not be the fact table. Okay. Okay, So okay. basically, see, basically, what will be, first of all, just tell me, first And discuss with respect to the requirements, right? yeah. So, okay, so can you do one thing? Can you just complete this? Then basically, I'll discuss the solution with you end to end. Okay, Okay, okay. take 15-20 minutes, try to design this, right? Whatever you think. And then basically, I'll discuss the solution with you and then we'll explain you. Okay, okay.
Now can I explain it? Diksha? I would say take some more time, right? Take 8 more minutes, right? I think this is not right what you have done. Just go through the requirements, see the requirements again, and then try to kind of, like just make some changes in the design. I'll give you 8 more minutes. Okay, okay. Think we can talk about it right now. Okay. Yeah. So see what was the requirement? Requirement was to kind of first of all track the rides. So what do we mean by tracking the ride? For example, each ride has a start time, let's say, or what is a Yeah, and destination, fare, right? yeah. The status, right, of the ride, whether it's completed, cancelled, right? Okay. And another thing is you can schedule the ride in advance or book instantly, right? Then you would have to create one users table as well, where the users can be either the drivers or the riders, right? Both will be your user, and riders can book multiple rides. Okay. And then your drivers can be online or offline, in specific zones, right? Then you have this dynamic pricing concept as well, where your fare depends on the distance, time of day, weather, all those things, and search pricing, right? Then ratings and feedback. Then another would be the audit and compliance, right, where you maintain the history records of billing, support, or compliance. So now first we have to draw the user table, right? Where is your user table? User details, user table is this one. This one, right? So what you have taken over here, user ID, name, there should be user ID, name, email, phone, and what kind of a user type he is, which it is missing, which is very important, whether he's a driver or rider, right? Okay, that is something you would have to kind of, create.
Okay, but I think you are segregating driver and user separately. So even if you don't mention about, you know, whether he's a, like, whether if you don't apply that check, that is also fine because you're using two tables, right? Correct, Okay. separately for driver and rider, right? Yes, yes. Then there would In be the one. trip details, I'm taking all like user ID, driver ID, the from and destination. No, no, If I'm any coming. change in I'm coming. destination or I'm yeah. coming to it. Then you will have driver table. In driver table, you will have driver ID and the user ID, vehicle ID, status, zone, and license number. So in the driver table, you have not mentioned about user ID, right? Because see, you have to relate these tables well. How user details is related to the driver details, right? So user ID will be the foreign key because user ID users will be the one who will be kind of booking the drivers. Right. So you should take driver ID as a primary key and user ID as a foreign key. Okay. Hmm. So those detailing needs to be mentioned. Then in the right table, you would have rider ID, ride ID, driver ID, right? Then start time, end time, source, destination, status, right? So if I see your ride details table, where is the ride detail table? You mean the tracking details I give, right? Details is user ID, driver ID from destination, change in destination, and total time taken. The And status I what is did the not. status? Yes, you have to keep that. Okay. And start time, end time. Okay. Now there would be one fare table. Okay. So what is the Where fare details? ID? Yeah, ride ID, base fare, distance fare, time fare, surge multiplier, and total fare. Right? Where are the fare details? So I think fare details is not correct. You would have to correct this. Yeah. Basically, you need to take these details as part of uh, you know fare table. I'm just mentioning over here. Okay, Uh-huh. these will be your columns in the fare table. Okay, then rating, right? Rating table. There would be one rating table as well. Where is your rating table? Yeah. One second now. Rating details, user ID, driver ID, rating, and date. I gave that's it. Four columns. You would have to also include the comments, right? What comment he has given, right? That for that feedback details I gave. Feedback, customer So, and so customer. take it as a one table only. Don't go into too much of details. In the rating table only, you can include the comment Include section. feed comments. Okay. Okay. Then I think one table that you have left is the vehicle table. Okay, because you need to mention about what is the vehicle Week. ID, right? Week. And yeah, who is the driver who is tagged to that vehicle, right? What is the model, right? What is the car number and capacity, seating capacity, basically. I've given in the chat table what columns you can have. Okay. Yeah. Now, basically for star schema, so you would create a fact underscore rides as a fact table. Okay, where you would have ride ID, rider ID, driver ID, vehicle ID, time ID. So these will be your fact table. I'm just giving you fact underscore rides. You can mention it. Okay, and this will be your fact table. Just see what I have mentioned over here. I can do all this. Okay. Fact underscore. Is there anything to can we write outside this? What is the better way to represent? No, you can write it in this way also, and you can write right outside as well, whatever you are comfortable with. Okay, Yeah, yeah. Outside, it's not taking like acha text I can take and write. Okay. right. Then Huh. basically, yeah. So you would have now what are the dimension tables that you will create? First will be the user table that you have created, vehicle table. You would also include the time dimension table, right? What is the date, day, month, year, hour, weekday, right? Then there would be one dimension location table as well. What is the location ID, city, state, latitude, longitude, zone, right?
Then fare breakdown table, right? What is a fare ID, base fare, distance fare, time fare, taxes, or what are the promotions or coupon codes applied, right? So Correct. if I see something like this, right, just a minute, let me just see. This is how your diagram should look like. Can I copy paste this? I think you would be able to. Okay. So this should have been the star schema. सो मोर ओवर हाई लेवल पे आपने ठीक ही किया है, जस्ट थोड़ा जो है ना उसको जो इश्यूज करें वो आपने ये करें कि पहले तो एक तो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप नहीं है टेबल के बीच में, राइट, वो इंक्लूड करना जरूरी है। दूसरी, फैक्ट टेबल सही से लेनी है। फैक्ट टेबल आप क्या, जितने भी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आप फैक्ट टेबल में इंक्लूड करते हो, करेक्ट? यस करेक्ट। सो मेक श्योर यू क्रिएट दोस। देन जो एक मेजर मिस था वो ये था कि व्हीकल डिटेल्स आपने कैप्चर नहीं करी थी, सिटी डिटेल्स ठीक थी, सिटी डिटेल लोकेशन डिटेल एक ही बात हो गई, राइट? व्हीकल डिटेल्स को आप कैप्चर कर सकते थे, राइट, ठीक है। अनदर पॉइंट दैट आई वुड से इज रेटिंग फीडबैक एक में कर लो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना? एंड राइट, अदर देन दैट आई थिंक ठीक था, राइट, इट वाज फाइन। जस्ट थोड़ा सा इसको और आप जैसे मैंने बताया उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अगेन what I would say over here is, right, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसलिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव काइंड ऑफ राउंड होता है, राइट? अब जैसे मान लो ये इशू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं आपको रिजेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, राइट? बिकॉज आप 40-45 मिनट्स में किसी को जज ही नहीं कर सकते इसके ऊपर, राइट? हाँ, अब अगर आप कुछ भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ें ड्रॉ करने में, देन इशू है, ठीक है। बट यहाँ पे आप कर पाए थे, आई थिंक ड्रॉ, राइट? सो विच इज रियली गुड। एक काम करते हैं, एक और सेशन रख लो आप इस पे ETL, इस पे बेसिकली मॉडलिंग, राइट? एंड थोड़ा सा और बेटर करना, राइट? आप इसको रेस्ट लेके थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो मैंने आपको सोर्सेज बताई है वहां से पढ़ो, राइट? एंड देन एक शेड्यूल कर लो, देन आई थिंक यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट। बट ये भी ठीक था, मैं इसको खराब नहीं कहूंगा। Yeah. No, Justin, this is a star scheme. Actually, I think we can make into a snowflake, the dimensions of dimensions. Like ideally, star scheme ही preferred होता है industry. Oh, okay. Because the because faster ज़्यादा performance. schema, हाँ, correct, faster updates and ये सारा कुछ होता है। रिटेल इंडस्ट्री में स्नोफ्लेक में जाएंगे ना जनरली? हाँ, रिटेल इंडस्ट्री, इन्वेंट्री रिटेल, ओके ओके, यस। सो एक राउंड इस पे और करते हैं, आई थिंक आप ले लो एक दिन पढ़ने का और, ठीक है? सैटरडे या संडे जब भी आपको टाइम मिले, सैटरडे आई थिंक ठीक है, सैटरडे कर सकते हैं या संडे जब भी आप फ्री हो। अच्छा। So, like, you want me to give a better performance for the same thing, or you'll be giving a different scenario? नया यूज केस दूंगा मैं आपको, ठीक है? या पढ़ के आना है आपको कि फैक्ट टेबल अच्छा क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, किस बेसिस पे फैक्ट टेबल जनरेट करते हैं, राइट? किस बेसिस पे डायमेंशन टेबल जनरेट करते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ के आना है, दैट्स इट। ओके, गॉट इट। ओके, ये वैसे ठीक था, दिस वाज फाइन। Okay. So जो मिस्टेक्स अभी करी हैं वो ना हो बेसिकली नेक्स्ट टाइम। Okay. And actually, in the face-to-face round, no, he was asking for, are you ready to work on a production environment as well? So you can tell me yes. जो भी वो पूछ रहे हैं yes बोल दो। हाँ, मैं तो yes बोल दी मैं। But time potential क्या रहता है production environment? Any risk factors will be there? I just wanted to discuss with you. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई प्रोडक्शन में काम करता है, हम लोग भी प्रोडक्शन में करते हैं। Yeah, that's what. कोई इशू नहीं है। वो एक्चुअली ETL लीड रोल है, वो एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इनटू डेटा इंजीनियरिंग, काइंड ऑफ सब डेटा इंजीनियरिंग है, इवन ETL कम्स इनटू डेटा इंजीनियरिंग ओनली। या बट आई थिंक बेटर है, आपको ग्रोथ मिले, आपकी सैलरी अच्छी हो, वो पहले देखो, राइट? अगर लेट्स से इसमें थोड़े दिन काम करना नहीं होता तो दूसरा देख लेना, राइट, करेक्ट? बट अपना पैकेज इंक्रीज कर लो, जो आपका कंसर्न था मेजर। या See, currently I'm having 7.7, Dikshan. So I am aiming for around 13 to 14. Is that fine?
नहीं 30-40 तो नहीं मिलेगा 7 लाख से जस्ट सीधे उस पे, बट हाँ या आप 12 आप 12 would एटलीस्ट, be नहीं आप एटलीस्ट, अच्छा 30-40% हाइक कह रहे हो, मुझे लगा 30-40 lakhs आप कह रहे हो। हाँ नहीं ओके 13 नहीं, LPA 30% हाइक, 13 LPA, ओके। नहीं इतना कम मत बोलो, एटलीस्ट आप 7 पे हो तो उनसे 18 मांगो आप, ठीक है 18 कोट 18 करो। हाँ क्योंकि उतना उनको देना चाहिए लीड लेवल पे 18-20 आराम से, राइट। आप जैसे अगर 8 पे हो, आप उनको जो है 20, मतलब 100% से ऊपर आएगी वो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको लीड लेवल पे देने में, ठीक है। सो आप ओ एटलीस्ट 20 फिक्स कोड करना एंड देन सी व्हाट दे हैव टू से, हाँ ओके ठीक है। बट करना जरूर, अगर आप खुद ही 13 कोड कर दोगे तो वो 2-3 और कम कर देंगे, है ना, तो मतलब नहीं है फिर, ठीक है। 20 आप कोड करना, देन दे विल गिव यू अराउंड 15-16 मैक्सिमम फिक्स, ओके एंड बस फिर क्या, आप एक बार आपको जस्ट वो आइडिया लग गया कैसे स्विच करते हैं, फिर आप कर सकते हो अपना, जब भी आपको नहीं समझ में आए यू कैन जस्ट स्विच द जॉब एंड यू कैन इंक्रीज योर पैकेज, या ओके ओके कूल, आई एम एंड हैप्पी, ऑल्सो या। yeah okay and if at all if you are taking for the Azure no like what you will be covering majorly Databricks डेटा ब्रिक्स नहीं, उस पे मैं आपको एश्योर का बताता हूँ, अभी एक बार आप इस पे फोकस करो ईटी डेटा मॉडलिंग के ऊपर। जिस दिन हम डेटा मॉडलिंग का रखेंगे ना अनदर राउंड, उसमें मैं आपको डेट उसका बता दूंगा, डेटा ब्रिक्स पे हाँ फैक्ट्री वगैरह पे क्या प्रिपेयर करना, आई टेल यू देन, ओके एंड ओके। दिस रियल टाइम इंजेक्शन आप मेंशन करें यहाँ पे सो रियल टाइम हाउ डेटा शुड आई इंजेक्शन, काफका एंड स्पार्क स्ट्रीमिंग, ठीक है। ये भी आई थिंक ये हम कब करेंगे, जब एक एक्चुअली स्ट्रीमिंग का मैंने आपको बताया था ना, जब केस हम रखेंगे हाँ राइट, तो उसमें मैं यस आपको यस बता दूंगा ये कैसे करना है, ओ ओके ठीक है। so actually aggregated data will be like complex no like वो ड्रिल डाउन होने पड़ेगा ना ग्रैन्युलर लेवल इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जस्ट आपको सारा कुछ जो है बेसिकली वो एक मैपिंग शीट होती है, उसमें दिया होगा कि उनको डेटा कैसे चाहिए, आपको वो सीक्वल से बस उसको उस लेवल पे लेके आना होगा, राइट, उस फॉर्म में, एंड देन बेसिकली यू वुड बी एबल टू डू दैट। अच्छा अच्छा इतना कुछ सो भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इंडस्ट्री में सारी चीजें आपको मिलेंगी इन हैंड्स और इन डॉक्यूमेंट्स, ओके। ओके ओके सो ओवरऑल यहाँ पे मैं फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स दी सो हाउ डू यू रेट मी लाइक वॉट एवर आई हैव डन I'll rate you 7 on 10, okay, this time. Okay, मैंने आपको ओके मिस्टेक्स बता दी हैं, right? या And yeah, so basically let's do one more round on this and then definitely I want to see the improved version, right? ये भी ठीक था, मैं गल खराब नहीं कहूँगा इसको, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था। या इसके बेसिस पे मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा आपको, that's what I'm trying to say. ओके Okay. एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग द कोडिंग ऑफ स्पार्क प्रैक्टिस बोल रहे थे आप वो हाँ आप गिटहब का लिंक दिए थे ना वॉट एवर द कोडिंग्स आर देयर दैट हेलो आरडीडी वो सब प्रैक्टिस करे तो ऑलमोस्ट इट विल बी कवर्ड नो हाँ, it will दैट्स be covered, right? उसमें वो ज़्यादा करना नहीं है। या ओके yeah definitely whatever your roadmap you are saying no it is very practical I can understand Yes. and how about this प्रैक्टिस ऑफ पांडास भी वो गिटहब का बस हो जाएगा ना उतना ही ठीक है, हाँ, उससे ज़्यादा या नहीं। हाँ so next we'll be having a data modeling one and Azure डेटा को मॉडलिंग है, मैं आपको थोड़ा सा एश्योर का बता दूंगा, ठीक है। या एंड या फिर मैं आपको ये रियल इंजेक्शन वाला स्ट्रीमिंग वाला यूज केस ही बता दूंगा उसी में, ठीक है। एंड या फिर पहले हम्म डेटा एश्योर का देखने का टाइम मिला तो मैं आपको स्ट्रीमिंग का केस भी बता दूंगा, नहीं तो स्ट्रीमिंग वाला केस जब स्ट्रीमिंग वाला राउंड होगा उसमें कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि स्ट्रीमिंग वाला भी हम उसी में कम करने का हो, ठीक है। yeah streaming together with Spark coding correct both हाँ together नहीं, can we do no हाँ वो देखते हैं, मतलब जिस हिसाब से आपके वो बचे होंगे मॉक उस हिसाब से कर लेंगे कि मतलब आपको दोबारा भी ना लेना पड़े एंड उसी में हो जाए, ठीक है। तो वो देख लेंगे उस हिसाब से। या डेफिनेटली और ये डेटाब्रिक्स और डेटा मॉडलिंग के बाद विल डू अ बिहेवियरल राउंड एम आई राइट हाँ आप बोले थे ना बीच में ही एक बिहेवियरल राउंड करेक्ट करेंगे करेक्ट, एक या वीडियो राउंड। या ओके सो अभी बस ईटीएल मॉडलिंग पे फोकस करो नेक्स्ट वाले, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट वाला जब ईटीएल मॉडलिंग वाला हो जाएगा ना उस दिन डिसाइड करते हैं फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या देना। या या ओके एनीथिंग एल्स दीक्षांत नो आई थिंक आई एम गुड, दीज आर द ओनली थिंग्स, ये सही था राउंड, राइट, जस्ट मैंने जो फीडबैक दिया उस पे काम करना,
And next time when we meet, like definitely I hope it would be a good performance as compared to this one, right? But this was not also bad. Okay. Yeah. Tomorrow also मुझे एक round है. This is with another company. They are not disclosing the client yet. But they were asking for knowledge of ML. I said knowledge of ML is there, but practical real-time scenarios में नहीं है. Let me see how the round goes on. I'll discuss with you in the weekend. अगर उसके बाद वो कुछ email वगैरह पे करते हैं, पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आप मेरे से connect कर लेना, I'll explain. ठीक है? Yeah, definitely. Okay. Okay, Diksha. Thank you very much. Thank you. Bye. Take care. All the best. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye.